So I think we are live. Okay, so let me check. Hello. So a very good evening, everyone. Welcome to this live session. Next live session, velocity and mechanism. Today we are going to discuss the another chapter that is related to velocity and mechanism, right? But before going to start velocity and mechanism, I will quickly finish two parts which were left in last class, that is quick return mechanism and elliptical trammel. So I'll give you a quick idea about the quick return mechanism, crank and slotted lever quick return mechanism, and then I'll discuss elliptical trammel. It will take hardly 5 to 10 minutes. So our first chapter will complete. Now then after that we'll move toward the next chapter, right? So here I'm waiting for other people to join. Okay. So तब तक मैं कोर्स क्रील के बारे में बता देती हूँ. कोर्स क्रील के बारे में वैसे हर क्लास में मैं बताती हूँ, बट जो न्यू ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है. So coursecreel.com is an online educational platform which provide different types of video courses in different categories of education, like engineering, like competitive exams, basically academics, competitive exams, skill development. For skill development, we have very good courses and the people are very happy with the courses. The courses are performing very well. We have AutoCAD, we have StatPro, we have ETABS, we have this SolidWorks. So there are so many courses related to skill development. We already have on our platform which is related to engineering. We have English speaking courses, German speaking courses. We have courses for competitive exams like banking and CAT and RRB, and the courses, some of the courses related to PSC and UPSC. So there are so many courses available on our platform. We have courses of chemistry, physics and biology, maths. We have complete course of math for IT and JE. So just do visit the website, or you can download the app. This is the link of app. So you can download the app from the Play Store, and you will get all the courses uh, which are related to different categories of education. Apart from that, in our app, we have test series is also for mechanical, civil, chemical, electronics, electrical, all possible fields of engineering. So just check the test series. Test series are very helpful for the evaluation purpose. If you want to, if you are preparing for any competitive exams or for your academics, so just to check your knowledge, whatever you have learned in your subjects, you can check your knowledge whether it is worth or not. Are you able to clear your exam or not? So with the help of test series you can find that. So just do visit the website, check out the courses, and whatever course you want to enroll yourself, you can enroll yourself in that course. And the courses are very, very affordable. Our motive is affordability and accessibility. So we are providing very affordable courses for the people who cannot afford, as well as people who can afford. Everyone are invited. So anyone who are interested in study, they can visit our platform and buy the courses which is available on the platform at very, very affordable prices. So just check the courses. ओके सो चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर टाइम. जो भी जिनका भी जो भी पोर्शन जो है वो मिस होता है, सो दे कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेसन. ओके, सो इट विल बी रिकॉर्डेड, द रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल इन यूट्यूब ओनली. Okay, so let's start. Okay, wait. Okay, we are not going to start from the velocity of mechanism here. Sorry. So we are going to start with a crank and slotted lever mechanism. Okay, तो ये जो है, it is the inversion of single slider crank mechanism, right? Single slider crank mechanism means what? The mechanism which have one sliding pair and three turning pair. One sliding pair and three turning pair. So you can see in this diagram. First, let's see why it is called quick return mechanism. Why it is called quick return mechanism? क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म. तो देखो, क्रैंक तो एक पार्ट हो गया,
Another part is slotted lever and quick return quick return motion mechanism basically. So motion जो है, it is quick return. मतलब if something is going forward, quickly it is returning to its original position. Right, so that is why it is called quick return motion mechanism. The mechanism is in the motion, but also it is having to and fro motion, forward direction, backward direction. So that is why it is called quick return. Quickly the part is moving. And here we have crank and slotted lever. So with the help of crank and slotted lever part, the mechanism is going to operate. Okay, तो यहाँ पे देखो number of इस diagram में अगर visible है so here we have point A and point B. You can see these 2 points and this point P. So this AP you can see this is a slotted lever part. Slotted lever, and in this slotted lever we have a slider which is sliding inside. Right, so this is the slider. You can see this is here, it is written slider. So slider we are considering link 1, and this slotted lever where the slider is sliding. So this lever we are considering as, or the slotted bar we are considering as link 4. Okay, now at point A we have one turning pair with another fixed link. That fixed link we are considering as link 3. And at one end of the fixed link the slotted bar is fixed and is connected, and another point we are considering as point C. So at this point one crank is connected. So crank we are considering as link 2, and the another end of the crank is connected to the slider. So this is the combination of 4 links. So here we have one sliding pair, the slider with the slotted bar, and another 3 turning pair. So slider with fixed link with the crank, and crank with the slider. So these 3 are the turning pair, and one sliding pair is the slider with the slotted bar. Now what is the purpose of this crank and slotted lever quick return mechanism? So here you can see the point P is connected with another link, that is PR, and this R end is connected with one ram which is carrying the tool. So when this complete mechanism is in motion, so the ram will get motion from the mechanism, and the tool is going to move in forward and backward direction to have cutting stroke and return stroke to perform a particular job. So basically this crank and slotted lever mechanism, quick return motion mechanism, are generally used in a shaping machine, slotting machine, or internal combustion engine basically. So this type of mechanism we use to provide forward and backward motion to a particular part. So sorry for that. So this is the basic concept of a basic use of crank and slotted lever quick return motion mechanism. It is providing to and fro motion, or we can say forward and backward motion to a particular part. So in this case what is going to happen here, देखो यहाँ पर एक point C है. So point C से एक fixed link connected है, and another point of the fixed link is A. So यहाँ से slotted lever connected है. Okay, now when this slotted lever is having motion, okay, because देखो यहाँ पर इस point पर connected है, तो जो slotted lever होगा उसका जो point होगा, it will have rotational motion. Okay, so it will move either in this direction or in this direction. Now suppose there are 2 points P1 and P2 are the extreme ends of the slotted lever, or extreme position of the slotted lever. In this case what is going to happen when this P is going in this direction, in anti-clockwise direction? So what will happen, this lever will be at position AP1. You can see AP1. In that case the slider will move according to change in position of AP. So it will move with the help of rotation of link. So when crank rotate,
the slider will move up or down. Accordingly, the AP slotted bar move and the fixed link will be fixed, right? So suppose if it is going toward P to P1, so the slotted lever, what will happen? The slotted lever will go down, and when it is moving in this direction, so it will go up. So according to change in position of AP, the slotted lever will change its position, and this change in position of the slotted lever of point P, which is connected to point R, in that case our ram will move in this direction or in this direction. So when there is a forward direction, that is called cutting stroke for the tool, and when there is a backward direction for the ram, it is called return stroke of the tool. Now here what is going to happen? Here the rotation of crank, complete rotation of crank, we are considering we are dividing the complete rotation of crank into two stroke. So here you can see two position B1 and B2, and the center or the point where the crank is going to rotate, or the turning pair with the fixed link, is C. So if the crank is moving from CB1 to CB2, here this complete rotation, which is denoted by angle beta, this angle. So when this crank is having this complete rotation from B1 to B2, so the stroke will be cutting stroke, and this is denoted by beta. And when the crank is moving from B2 to B1, CB2 to CB1, so there is a stroke we will consider, that is return stroke. Okay, so CB2 to CB1 is return stroke. So it will be clockwise rotation. Okay, and CB1 to CB2 is cutting stroke. Right. So in this case, we can define the rotation of crank with the help of beta and alpha. Right. So here we can define the time of cutting stroke and time of return stroke. So the ratio of time of cutting stroke divided by time of return stroke will be defined by what? It will be defined by beta and alpha. Right. Now here we can define the beta as or we can convert this in a single variable. So beta will be, and alpha will be 360 minus beta, right, from here. So alpha will be 360 minus beta. So here we have, or here it will be 360 minus alpha divided by alpha. So this can be our equation, right? Now this is the ratio of time of cutting stroke and time of return stroke. Now if we want to define the complete uh, complete stroke covered by the tool, so it is the combination, or it is the summation of cutting stroke and return stroke. So suppose this slotted bar is moving from P1 to P2, so the same motion we are considering, or the same distance we are considering for the tool for the cutting stroke and return stroke. Okay, तो अगर हम P1 और P2 को join करें, तो same distance will be covered by the tool here during translation. So it is representing R1 and R2. Okay, so R1 R2 will be equals to P1 P2, right? So here if we want to define the length of stroke of the tool, if we want to define the length of stroke of tool, so it will be equals to what? R1 R2, right? And which is equals to what? P1 P2. Hopefully you can yeah, जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, hopefully you are going to understand all the concept. If you have any doubt, please ask me. I'll clear all your doubts. Okay, so the length of stroke of tool will be R1 and R2. Okay, now here if we solve R1 and R2 in terms of P1 and P2, so it will be equals to what? Suppose अगर हम यहाँ पे mid point ले लेते हैं P1 और P2 का O, so it will be OP1 or OP2. Right, it will be what? OP1 or OP2.
So it will be, no, let's take this point as Q, not O. कई बार confusion हो जाता है. So 2p1q, let's take Q. ओके, और अगर O लेते हैं तो O, 2p1o, O कई बार हम ओरिजिन पॉइंट या सेंटर पॉइंट को भी ले लेते हैं. ओके, so this is 2p1q. Now here p1q we can consider as the one side of the triangle, and so this is the triangle we are going to use for the solution, p1qa. Okay, so from triangle p1qa we can define the length of the stroke. So it will be what, यहाँ पे अगर हम देखें p1q, so p1q we can define with the help of other two length or with the help of angle. So suppose देखो यहाँ पे ये जो complete angle ये alpha है, so this angle will be half of the alpha by 2. So if we want to define this p1q, so it will be 2ap1. Here you can see 2ap1, अगर हम cos टर्म लेते हैं, so it will be 2ap1 cos alpha by 2. और cos alpha by 2. Sorry, just a second. It will be, okay, no, it will be sine, if we consider sine, so okay, so this will be 2ap1 sine 90 minus alpha by 2, so that will be equal to cos alpha by 2 only. Okay, so this term we are going to have, this 2ap1 will be equals to what? It will be ap, we are considering ap only. Okay, so ap1, ap and ap2. See, you can see this is the path followed by point P. So this is representing the radius only. So AP1, AP and AP2 all are equal. So here 2AP cos alpha by 2. So this is the final term which we can define as the length of stroke of the tool. Or if we want to define cos alpha by 2 with the help of triangle only, so 2AP into, it will be equals to CB by AC. So here we can simplify in whatever manner. If you want to take it as in terms of angles, you can take it as in terms of angles, or if you want to define in terms of length, so you can define it with the help of this formula. So this is just a simplification. So the main purpose of slotted lever quick return motion mechanism is generally used in slotting in shaping machine or sometime in internal combustion engine, where we require quick return motion of the part. And if you want to define the time of the cutting stroke and time of the return stroke ratio, so it will be like this. We can define the length of stroke or the complete length covered by the actual part. अगर हम internal combustion engine में लेते हैं, so internal combustion engine में cutting का option तो नहीं होगा, but it will be considered as the forward and return stroke of the part. Okay, so this is about quick return motion mechanism. नेक्स्ट जो था हमारा डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म था एंड इट्स इन्वर्जन. सो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म वेयर देयर आर 2 स्लाइडिंग पेयर एंड 2 टर्निंग पेयर. ओके, तो इसका एग्जांपल था इलिप्टिकल ट्रैमल. राइट, तो इलिप्टिकल ट्रैमल में बेसिकली 4 लिंक्स होती हैं. ओके, सो 1 लिंक इज फिक्स्ड. Here 2 link we are considering as slider, so we are considering link 1 as the slider and link 2 as the slider, which is moving inside or which is sliding inside the fixed link. And there is a point we are considering, another point either we can take outside or inside. So what is going to happen when this slider slide in this direction? So this slider which is connected with the one link, it is moving in this direction,
and the motion of these two slider provide rotation to this point or this particular link which is connecting the sliders 1 and 2. So here this link will move according to the motion of the slider inside the sliders inside this particular slotted bar, right? So this is the concept of elliptical trammel. Here elliptical trammel is generally used to draw the ellipse. बेसिकली ड्राइंग पर्पज से यूज करते हैं जब हम मशीन ड्राइंग वगैरह इंजीनियरिंग ड्राइंग जब हम बनाते हैं तो इसका मेन पर्पस वो होता है टू ड्रॉ द इलिप्स. Okay, so this device work in this particular manner. Two slider which is connected with one link, and these two slider are sliding in a slotted bar which is fixed. So the movement of the slider is giving rotation to the fourth link, and this link will move and draw the ellipse. Okay, so here we have two slotted two sliding part which is moving in the slotted part. Okay, and it is forming two turning pair and two sliding pair. So this is the double slider crank mechanism. Why it is called inversion? Why? Because here लिंक्स आर फिक्स्ड, मतलब एक स्लॉटेड बार जो है जिसमें फर्स्ट स्लाइडर मूव कर रहा है वो लिंक फिक्स्ड है, जिसमें सेकंड स्लाइडर मूव कर रहा है वो लिंक फिक्स्ड है. तो इन्वर्जन मींस वेयर देयर आर नंबर ऑफ लिंक आर फिक्स्ड व्हिच इज नॉट अफेक्टिंग द एक्चुअल मोशन और रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट. ओके, सो आई होप ये चीज जो है वो आप लोगों को क्लियर हुई होगी. ओके, सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं पे एंड होता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट the next chapter, that is velocity and mechanism. Okay, so okay, coffee time I guess me, so just give me a moment. My throat is not well today. Let's start another chapter, that is velocity and mechanism. Okay, देखो द कोर्स इज क्रैश कोर्स. ओके, सो क्रैश कोर्स इज व्हाट, हर एक चीज जो है वो डिटेल में नहीं बताई जाएगी आपको. विल डिस्कस द बेसिक टर्म्स और द रिक्वायर्ड टर्म्स. ओके, तो here everything I'm not going to solve. Okay, so I'm giving you the idea about the concept and the practice question. I will try to do some practice question here. लास्ट में हम एक गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी एक सेशन रखेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि कॉम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट उसके लिए वी नीड टू क्लियर ऑल आवर कॉन्सेप्ट्स, राइट. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज वेलोसिटी इन मैकेनिज्म, राइट. सो जस्ट लेट मी चेक द कमेंट्स हियर. Just give me a moment. If you have any doubts, so I'm just checking the comments. Actually comments जो हैं वो थोड़ा देर से विजिबल होते हैं. ओके ओके, अभी तो यहाँ पर मुझे विजिबल नहीं हो रहे हैं. किसी का कोई डाउट अगर है तो प्लीज write your doubts in the comment box. Okay, chalo, now let's start the another topic, that is velocity in mechanism. Okay, right. If you have any suggestion related to lessons, so please let me know. Comment box में लिखिए या फिर you can mail us also codescreel@gmail.com पर, ताकि अगर कुछ improvement की ज़रूरत है या फिर कुछ extra effort लगाने की ज़रूरत है, so we'll do that definitely. Okay, चलो, now don't waste time, let's start velocity in mechanism. Okay, तो velocity in mechanism. Okay, अब यहाँ पे दो टर्म हैं, velocity and mechanism. देखो mechanism मैं बता चुकी हूँ. Mechanism is a combination of link, or suppose if we are considering kinematic chain, so first end and the last end is connected to with each other, and one link at least should be fixed. So that is mechanism. अभी mechanism ऐसा नहीं है कि mechanism
स्टेबल है, मूव नहीं कर रही है. ओके, ऑल द लिंक आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हैविंग रिलेटिव मोशन. Okay, so where there is a motion, we will consider three terms: displacement, velocity, acceleration. Velocity can be linear velocity, velocity can be angular velocity. Acceleration can be linear acceleration, acceleration can be angular acceleration. Okay, so it depends on the link movement. Okay, so here if we are considering mechanism, so there will be a motion, and if there is a motion we have to consider velocity and acceleration. Okay, so the one by one we are going to take this part. So initially we are going to take the topic which is velocity in mechanism. Okay, so this is the basic concept of velocity and mechanism, why we are going to learn this velocity and mechanism. Okay, तो if you have seen any machine, okay, जैसे यहाँ पे ये जो है हमारा, देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में you can see there are number of parts. Okay, so here one part is moving with respect to another part and there are so many parts connected to each other. Okay, so यहाँ पे क्या है, this is also a type of mechanism. Machine is what? Combination of mechanism होता है machine. It can be a single mechanism or it can be combination of different mechanism, and here number of parts are connected to each other and moving with respect to each other. So here we should know what should be the velocity we have to provide to each and every part to perform a desired work. Okay, तो जो भी हमारा desired object है, suppose अगर हम कोई vehicle चला रहे हैं, okay, and if we have to move at 40 km/h speed, okay, so it is only possible with the help of the assembly. Okay, तो जो भी assembly है कार की, कार का इंजन है, डिफरेंशियल है, या व्हील्स हैं, एक्सेल्स हैं, और जो इंटीरियर में जो भी पार्ट मूव कर रहे हैं, इंटीरियर में जो भी पार्ट विजिबल है, सो ईच एंड एवरी पार्ट इज कनेक्टेड टू ईच अदर. So we have to provide a proper velocity with whatever part is in motion to get the final output as 40 km/h. Right? तो अगर हमारा final output है, if we have to drive a car at 40 km/h, so at what velocity we have to run all other parts of the machine, of the automobile, to perform the desired job efficiently. Right? So here we will define or we will consider or we will learn about that only. Okay, तो किस पार्ट को कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए इन अ मैकेनिज्म, और हाउ वी कैन डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट विच इज मूविंग इन अ मैकेनिज्म, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. राइट, तो वेलोसिटी इन मैकेनिज्म जो है, it is mainly defined with the help of instantaneous center. There are two methods by which we can define the velocity. One is the instantaneous center method and another is the relative velocity method. So one by one I'm going to take. So first we will learn about the instantaneous center. Okay, so instantaneous center method. Now what is instantaneous center? Before going to learn about the method which is instantaneous center method to define the velocity, first we should know about the instantaneous center. Okay, so what is instantaneous center? तो देखो instantaneous center is what? Circle है एक, circle का center means suppose if we have a point and we have a rope and we are moving along this path, a circular path. Okay, so there is a fixed center for the circular path, so this is the center of the circle. Okay, या फिर अगर हम कोई ellipse लेते हैं, so suppose, या अगर हम कोई इलिप्स लेते हैं तो इलिप्स का भी एक सेंटर होगा विच इज बेस्ड ऑन द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. यहाँ पर हम रेडियस के बेसिस पर सेंटर डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बेसिस पर डिफाइन करेंगे. तो कोई भी कर्व पाथ अगर कोई लिंक फॉलो करती है, सो इट विल follow that curved path with respect to one center, with respect to one fixed axis. Okay, so whatever path a link is following, which is curvilinear or rotational, that will be followed with respect to one fixed point, that is called instantaneous center. कोई भी link अगर एक रोटेशनल मोशन और कर्विलिनियर मोशन फॉलो कर रही है, सो इट विल यूजुअली हैपन with respect to or by one point, with respect to one point, that is called instantaneous center. Okay,
ओके, अब ये कैसे पता चलेगा? देखो, इफ यू हैव सीन ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल में इफ यू सी द मूवमेंट ऑफ व्हील, so how you can see the movement of wheel? The movement of wheel is, you can, the visible motion of the wheel is rotation, right? But it is not actually a rotation, it is translation plus rotation. Why? Because जैसे जैसे wheel move करता है, हमारा व्हीकल जो है वो आगे बढ़ रहा है. इट मीन्स सपोज अगर हम व्हील का एक पॉइंट फिक्स पॉइंट ले लें, तो उस फिक्स पॉइंट की पोजीशन कंटिन्यूअसली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन जो है वो चेंज होती रहती है ना? सपोज यहाँ पे अगर हम कोई व्हील लेते हैं, सपोज देयर इज अ व्हील, इट इज मूविंग ओवर अ फिक्स्ड सरफेस, ये हमारा कार का व्हील है, एंड दिस सर्कल is having a center. Okay, so here suppose this is the point, this is the point which is in contact with the surface. तो suppose अगर हमारा wheel clockwise direction में move कर रहा है, so this point is continuously changing its position over this surface. एक rotation complete करेगा wheel, फिर दोबारा से अपनी ये जो पॉइंट है इस सरफेस को टच करेगा, फिर रोटेट करेगा, फिर एक पर्टिकुलर एंड पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर दोबारा से इस सरफेस को टच करेगा. तो ये जो पॉइंट है इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, and this particular wheel is rotating with respect to this center. Okay, तो इस सेंटर के ये जो हमारा फिक्स्ड जो भी हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है वो एक सेंटर के अबाउट हो रहा है. सो द पोजीशन ऑफ सेंटर इज आल्सो चेंजिंग. यहाँ पर आएगा, देन इट विल गो हियर, देन इट विल गो हियर. तो दिस मोशन is representing what? Rectilinear motion or translation, and this motion of the wheel is representing rotation. So sometime if we see anything which is having rotation plus translation both, so here we don't consider motion in terms of translation and rotation. Here we will provide or we will consider the motion in terms of pure rotation. Okay, कभी भी हम व्हील को ये नहीं कहते कि व्हील जो है वो ट्रांसलेट होता है, व्हील हमेशा रोटेट होता है. ओके, व्हाई? बिकॉज इट इज मूविंग with respect to one center. So this particular motion we will consider as pure rotation. Okay, so it is rotating with respect to one point. That point is known as instantaneous center. या फिर एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं. Suppose here we have one link AB. Okay, so AB initially it is changing its position to A1 B1. There are no two different links, this is one link only. So AB is changing its position to A1 B1 in terms of translation, right? Now after some time the AB1 is having rotation, so the A1 will be fixed and B1 will be moving. So here this is representing rotation. नाउ सिमिलरली अगर हम इसको अपोजिट कर देते हैं, तो सपोज इफ वी हैव अ लिंक ए बी विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रोटेशन विथ बी, सपोज यहाँ पे बी डैश लिख देती हूँ, सो बी डैश, and this AB dash is after that it is having translation, so it is changing its position to A1 B1. Okay, तो यहाँ पे क्या है? rotation then translation. Okay, but here you can see which point is having more displacement. Obviously A and A1 and B and B1 is having same displacement at this end, but in rotation B point is having more displacement. So the displacement of B is more than displacement of A. Similarly here the point B is having more displacement than displacement of A. So here wherever we are considering translation and rotation, so we will see the maximum displacement of the link, and here you can see the maximum displacement coming at point B, and this B is changing its position with respect to one end
And here the final term or the final position we are defining with the help of one fixed point. Okay, so here whether it is translation or rotation or translation, we will consider the final motion as pure rotation about one point. Pure rotation about one point. So that point is known as instantaneous center. This point is known as instantaneous center. राइट, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर कुछ नहीं है, जिस पॉइंट के अबाउट हमारी जो लिंक है वो मूव कर रही है विद प्योर रोटेशन, सो दैट पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर. अब देखो सर्कल का जो सेंटर है वो तो सेम रहेगा, या जिस पॉइंट के अबाउट हमारी जो लिंक है वो रोटेट कर रही है वो तो सेम रहेगा. बट अगर लिंक जो है पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, जैसे हमारा व्हील है, व्हील जो है अपनी पोजीशन ट्रांसलेशन में कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमें एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है. तो जो भी इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो भी उस मूवमेंट के साथ मूव होगा. मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर की पोजीशन जो है वो ट्रांसलेशन के साथ कंटिन्यूसली चेंज होगी. ओके, सपोज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, this is the center about which our this wheel is moving, but this wheel is also changing its position, मतलब displacement हो रहा है. तो suppose इस point के about अगर हमारा wheel rotate कर रहा है तो ये point जो है एक after traveling a particular distance it is changing its position, then again it is changing its position, or it is moving with a particular distance. तो जैसे जैसे distance change होगी जो instantaneous center है उसकी position भी change होती जाएगी, right? So instantaneous center can be fixed for one position, but if we are considering continuous motion in the link, so the instantaneous center will be changed with the movement of link. Okay, तो जैसे जैसे लिंक की पोजीशन चेंज होगी इंस्टेंटेनियस सेंटर की पोजीशन जो है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होगी, राइट? सपोज अगर हमारी लिंक यहाँ पे है, एक लिंक हमारी यहाँ पे है, it is having it is moving with one center like this. okay, suppose इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर आई है, हम आई से डिनोट करते हैं. ओके, सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ लिंक, सपोज ए बी. अभी हमारी जो लिंक है, सपोज अगर हमारी लिंक यहाँ पर आ जाती है, ओके, तो दिस इज द वन पोजिशन ऑफ द लिंक, नाउ दिस इज द अनदर पोजिशन ऑफ द लिंक. सो इस इन दिस केस our link will change the instantaneous center position. okay, distance वही रहेगा, बट जो पोजीशन है इंस्टेंटेनियस सेंटर की वो चेंज हो जाएगी, राइट? सो इंस्टेंटेनियस सेंटर कैन चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स पोजीशन इन स्पेस. ओके, जस्ट अ सेकेंड. So instantaneous, this will in this condition जो हमारा instantaneous center आएगा, that is called instantaneous center, sorry for the handwriting, instantaneous center of rotation, or it is called virtual center also, because it is not visible. okay, it is called virtual center also, and this is moving with respect to center, और ये जो center है इसकी एक fixed axis भी होगी. so the axis एक point के लिए तो सेम रहेगी, दूसरे point पर axis की भी position change होगी. तो जो भी locus इस particular change की वजह से form होगा, that is called exode, right? तो locus जो भी form होगा हमारी axis का, locus of axis is called exode, right? Okay, so the locus of axis is called exode, और ये जो axis है that is called instantaneous axis, right? So instantaneous axis is what?
the center or the instantaneous center which is passing about one axis, that axis is called instantaneous axis. Okay, तो जैसे center का हम axis लेते हैं, so in the same manner we will take the axis of instantaneous center, that is instantaneous axis, right? So यहाँ पर एक point मैं लिख देती हूँ, instantaneous center goes on changing from instant to another. Right, so instantaneous center is goes on changing from instant to another, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जो भी हमारी लिंक चेंज हो रही है, तो हमारा instantaneous center भी चेंज होगा. ओके, सो these point you have to remember all these 3 points, right? चलो, give me a second. Actually मुझे यहाँ पे जो Manish, which point you want to repeat? जो भी पॉइंट रिपीट करना है प्लीज मेंशन दैट पॉइंट, बिकॉज क्या होता है ना, दिस इज द लाइव लेसन, तो इस लाइव में जो कमेंट आते हैं वो थोड़ा सा लेट आते हैं, प्लस जो वीडियो है वो हमारा एक लैग के साथ चलता है. ओके, तो अराउंड 60 सेकेंड का लैग जो होता है उसके साथ चलता है, तो मैं 60 सेकेंड आगे रहती हूँ और आप लोगों को 60 सेकेंड पीछे का जो वीडियो है वो दिखता है. ओके, सो वॉट एवर डाउट यू हैव प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. ओके, क्योंकि टाइम जो है वो मैच नहीं करता, मैं 1 मिनट आगे बढ़ जाती हूँ तो उस पॉइंट पर मैं आपको कैसे उस चीज को एक्सप्लेन करूँ. ओके, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं होता कि आप कौन सा पॉइंट जो है एक्सप्लेन या रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, तो जस्ट मेंशन दैट पॉइंट, राइट? चलो, सो दिस इज अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर. ओके, अभी देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स पोजीशन पर मूव नहीं करता है. ओके, तो जैसे if we talk about the steering, okay, so one end of the steering is connected, one end of the steering which is connected with one rotational part, and another part of the steering is in the hand of the driver. Okay, so that steering is moving with respect to hand of the driver, it means it is moving in a space, in a particular space. Okay, तो जो भी part एक फिक्स पोजीशन पर मूव कर रहा है तो उसके लिए तो हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है वो डिफाइन करना इजी होता है, बट एनी पार्ट विच इज मूविंग इन अ स्पेस, so for that we need to find out the instantaneous center. Okay, that is why it is called virtual center, instantaneous center. तो यहाँ पर दो टर्म है, that is called space centroid and body centroid. If you need notes then please let me know, मैं notes provide कर दूंगी. I have notes in the handwritten form. Okay, so just drop me a message or drop me your mail ID. Either you can mail me or you can message on the official number, it is 9372276663, so I can give or I can provide notes also. Okay, so mail करते हैं वो ज़्यादा better होगा, so mail के through ही notes जो है वो scan करके मैं provide कर दूँगी. Okay, so space centroid और body centroid जो है, space centroid क्या होता है, when our object is moving in a space, when our object is moving in a space, so why the center, that particular object is moving in space, that center is representing the space centroid. ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली स्पेस में मूव कर रहा है, so that particular center about which that object is moving is called space centroid. And if we talk about body centroid, so body centroid means the object is moving in pure rotation with respect to other object or other body, so that is called body centroid, right? तो space centroid and body centroid क्या होता है, the space
the instantaneous center in the space. Instantaneous center in space and इंस्टेंटेनियस, ये जो है बॉडी है, इंस्टेंटेनियस सेंटर रिलेटिव टू बॉडी. ओके, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग or which is having rotational motion, and here we are considering the instantaneous center for the object, that is I1 for the first position. अगर सेकंड पोजीशन लेते हैं तो सपोज अगर हम इसकी सेकंड पोजीशन लेते हैं तो ये आता है यहाँ पे I2 पर. ओके, जैसे जैसे मूव करेगा, है ना, तो अगर हम मान लो सेकंड पोजीशन इस यहाँ पे ले लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की, सो इट इज moving with center I2. Okay, ये A, ये B, this is also A and B. Okay, so ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है जिसके अबाउट हमारी बॉडी मूव कर रही है इन स्पेस, so this I1 and I2 will be considered as sorry, space centroid. Okay, centroid means center about which that body is moving. Okay, and body centroid means if that object is moving with respect to the body or relative to body. Okay, तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रोड आएगा, सपोज अगर हम यहाँ पे पोजीशन लेते हैं C1. Okay, so C1 can be on the same point of I1 or it can be on different point. Okay, so there is a difference between space centroid and body centroid. Space centroid, there is a free motion we are considering. It is not with respect to another object. We are considering the rotation of that object only. But in actual condition, any object move with respect to another object. ओके, रिलेटिव मोशन, तो उस केस में हमारा जो सेंटर आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज बॉडी सेंट्रोड, एंड इट कैन बी एट द सेम सेंटर और इट कैन बी एट द डिफरेंट. ओके, बट उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो C1 है, C1 सपोज इट इज एट I1 ओनली एट फर्स्ट पोजिशन. ओके, so here what we are considering, this position of I1 and C1 we are denoting on two different axes or two different curve or two different locus. So it is represented by one triangle. So with the help of this triangle we are defining the position of I1, right? Suppose C1 is on the same position of I1. So in that case, what we have to define, if we are considering the second position of this particular link, and if we want to define the instantaneous center in terms of I2, and if we want to define the position of this body centroid at the same point of I2, in that case, these two triangle, which is defining the position of I1 and I2, should be identical. It should be identical. In that case only the C1 will be at the second position of C2, which is coinciding at with I2. Okay, so this is the concept of instantaneous center. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जब आप ड्रॉ करोगे ना तब थोड़ा सा समझ में आएगा. हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ये चीज, बट व्हेन यू ड्रॉ द इंस्टेंटेनियस सेंटर, इन दैट केस यू विल बेटर अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. ओके, तो बस यहाँ पे ये चीज याद रखना, स्पेस सेंट्रोड एंड बॉडी सेंट्रोड. व्हाट इज स्पेस सेंट्रोड, व्हाट इज बॉडी सेंट्रोड. और इसके बाद जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो हम एक्चुअल में डिफाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मूवमेंट किस तरह का है. ओके, और बॉडी सेंट्रोड जो है, बॉडी सेंट्रोड जैसे हमारा ये जो सरफेस है, अगर हमारा सरफेस जो है इस तरह से मूव कर रहा है, ओके, अबाउट दिस, तो बॉडी सेंट्रोड जो है हम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं. सो दिस इज अबाउट द स्पेस सेंट्रोड एंड बॉडी सेंट्रोड. अभी
चलो डायग्राम में भूल गई थी मैं, यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था। ओके, तो देखो ये कॉन्सेप्ट तो मैं बता चुकी हूँ। अभी देखो यहाँ पे एक पोजीशन, एक चीज जो है वो और भी हमें यहाँ डिफाइन करनी है। यहाँ पे सिर्फ हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है डिफाइन नहीं करना है। व्हाई वी आर ड्राइंग द इंस्टेंटेनियस सेंटर, वी आर ड्राइंग द इंस्टेंटेनियस सेंटर और वी आर डिफाइनिंग द इंस्टेंटेनियस सेंटर to define the velocity of the object or define the velocity of the body. Okay, so we should have here velocity and direction also for a particular object. Okay, suppose अगर हमारी ये link है हमारी a1 b1. Okay, so initial position is this, so we should have the velocity of this particular link. ओके अभी ये जरूरी नहीं है कि अगर हम दो एंड पॉइंट ले रहे हैं इस पर्टिकुलर लिंक के तो दोनों एंड पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। ओके, सपोज दिस पर्टिकुलर एंड इज फिक्स्ड एंड दिस पर्टिकुलर एंड इज मूविंग, in that case this particular end can have different velocity, this end can have different velocity. Okay, अगर हम यहाँ पे किसी और लिंक के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, in that case it will have some velocity. और suppose अगर हम इस complete link को ही fixed कर देते हैं, in that case it will not have any relative motion, means दोनों की जो velocity है वो with respect to other link जो है वो same रहेगी, right? So this is the concept. Here we need to find out the velocity of two different point of the link or another link which is moving with respect to one link. तो यहाँ पर हमें relative velocity define करनी पड़ेगी. Suppose अगर हमारे पास दो point हैं, so we should have at least velocity of one end if we want to define the velocity of another end. और we should have velocity and जो हमारा डायरेक्शन है फॉर वन एंड और डायरेक्शन फॉर द अनदर एंड to define the relative velocity of the second end. Okay, so to define the velocity we are using one method that is called instantaneous center methods. तो हम instantaneous center method के basis पर velocity जो है वो find out करेंगे for a particular length. That is why this chapter is all about the velocity in mechanism. Okay, this is not about instantaneous center, this is about the velocity in mechanism. राइट, होपफुली कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर होगा. इफ यू हैव डाउट प्लीज लेट मी नो. ओके, या फिर आप कमेंट, जो फाइनल जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है उसमें ज़्यादा देर तक कमेंट्स रहते हैं तो उसमें आप कमेंट कर सकते हो. मैं पढ़ के नेक्स्ट क्लास में, अगर अभी इस क्लास में मैं सॉल्व नहीं कर पाई डाउट तो आई विल डेफिनेटली सॉल्व ऑल योर डाउट्स इन नेक्स्ट क्लास. राइट, so here we have two links. So this link A1 B1 is having relative motion and it is moving with respect to one instantaneous center I1. और ये जो instantaneous center है we are defining by A1 and B1. जो A1 और B1 की पोजीशन चेंज हो रही है उसके बेसिस पर दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हम डिफाइन कर रहे हैं एज I1. एंड अगर इस A1 B1 की पोजीशन अगेन चेंज हो रही है इन A2 B2, so again we are defining the instantaneous center I2 with respect to these two lines which is passing through A2 and B2 and the intersection point will be I2. So these I1 and I2 are the space centroid because this link is moving in a space. Okay, so instantaneous center in a space is defined as space centroid. But here we are defining the centroid in terms of body with respect to another body, so that is called body centroid and it will be on the same position of instantaneous center or it can be on different position of the instantaneous center. ओके, तो जरूरी नहीं है कि जो बॉडी सेंट्रोइड है वो सेम पोजीशन पर हो इंस्टेंटेनियस सेंटर की. उस केस में क्या करना होगा, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ये और ये वाला, these two triangle should be identical, right? So this is the concept of body and space centroid. Now method of determining the velocity of the link at one point, at a point on a, it can be we can define for the mechanism or
for a link, because link is a part of mechanism. So method of determining the velocity of point of mechanism. Here we will consider complete mechanism. Okay, so one is instantaneous center method. And another is relative velocity method. राइट अभी देखो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में फर्स्ट लेके चल रही हूँ. ओके, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर इसके लिए वी शुड नो हाउ मेनी इंस्टेंटेनियस सेंटर मैकेनिज्म है. ओके, अगर हम एक लिंक की बात करते हैं, सपोज अगर हमारे पास एक लिंक है एंड इट इज मूविंग with respect to one center, so that center we will consider as one only. But अगर हमारे पास number of links हैं, number of links are connected to each other and each and every link have relative motion. Suppose ये वाला link जो है हमारा rotate कर रहा है, so it is provide suppose, और ये fixed है, so it is providing motion to this link as well as this link. Okay, जो हमने लास्ट क्लास में एक जो डायग्राम है वो स्टडी किया था 4 बार चेन का. तो इसमें सपोज अगर हमने एक लिंक फिक्स कर दिया है और एक को हमने प्राइमरी लिंक को अगर हमने मूवमेंट प्रोवाइड किया है, सो इट विल provide definite motion to other two links. In that case, here number of links are moving with respect to each other. In that case, we can have number of instantaneous center. Okay, तो ये जो link है, it is moving with another instantaneous center. This link will move with another instantaneous center. This link will move with another instantaneous center. So if we have combination of links which are combined with each other, which are connected with each other, and if they have relative motion or if they have pure rotation, in that case, there are different instantaneous center we have to mark for each and every link. Okay, so for that, वी आर यूजिंग इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड. बट उसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल इंस्टेंटेनियस सेंटर अ मैकेनिज्म हैव. ओके, क्योंकि मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक है, ईच एंड एवरी लिंक इज मूविंग, सो वी शुड नो हाउ मेनी इंस्टेंटेनियस सेंटर वी हैव. ओके, सो हियर वी विल फाइंड आउट फर्स्ट नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इन मैकेनिज्म. ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है that is called n equals to n into n minus 1 by 2, where n, small n, is number of links. n is number of links. Okay, तो instantaneous center जो है number of links के basis पे निकालते हैं. instantaneous center जो है number of instantaneous center, इसको हम denote करते हैं n से. but इसको हम define कैसे करते हैं, maximum number of possible combination of the kinematic chain. okay, इसमें हमें क्या क्या डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ, बेसिकली पेयर के फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं. जैसे अगर हमने यहाँ पे 4 लिंक ले ली, ओके, किसी भी काइनेमेटिक चेन में नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो लिंक्स के कितने हो सकते हैं, उसके बेसिस पर नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर हम डिफाइन करते हैं. सपोज दिस इज आवर लिंक 1, दिस इज आवर लिंक 2, दिस इज लिंक 3 एंड दिस इज लिंक 4. सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन वी कैन डिफाइन फॉर लिंक 1 and 2, for 2 and 3, for 3 and 4, and 4 and 1. For each two links or for a pair in a kinematic chain, how many combination we can define, that number of combination is defined in terms of number of instantaneous center. Okay, suppose अगर हम इसके 4 कॉम्बिनेशन निकालते हैं, 1 and 2 का एक कॉम्बिनेशन आ गया, 2 and 3 का एक कॉम्बिनेशन आ गया, 3 and 4 का एक कॉम्बिनेशन आ गया और 4 और 1 का एक कॉम्बिनेशन आ गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर आ जाएंगे हमारे 4. राइट, तो जैसे अगर हमने 4 लिंक ली, सपोज our number of links are 4, so here we can define 4 into 4 minus 1 divided by 2, तो ये क्या हो जाएगा 6. तो अगर हमारे पास 4 नंबर ऑफ लिंक्स हैं तो उसके 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर बन सकते हैं, इसके 4 नहीं बनेंगे. ओके, इसके कितने बन सकते हैं, 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर. अब यहाँ पे अगर हम देखें विजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर
हम सिर्फ कॉम्बिनेशन के बेसिस पे यहाँ पे बना रहे हैं, बट एक्चुअल इंस्टेंटेनियस सेंटर जो होते हैं वो 6 होते हैं। ओके, 6 होते हैं और उसके 3 टाइप होते हैं, फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर, परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर एंड नीदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट। ओके, तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर का वो समझ में आ गया होगा। ओके, सो इफ वी वांट टू define the velocity at a particular point of a link in a mechanism, if we are using instantaneous center method, so our first step should be to find out the number of instantaneous center, right? So this is about to find out the number of instantaneous center in mechanism. So today I'm going to conclude my lesson here only. Okay, next, because already 1 hour more, it's more than 1 hour. So I'm going to conclude this lesson here. Next lesson we'll continue with the same point. Okay, so thank you so much and see you next class. If you like the lesson, please share the video with your friends and the people who actually require. And if you have not subscribed, please subscribe the channel. So thank you so much. See you in next class and good night.